Hello children, today I will explain the question answers part of lesson number 6 Delicious Buns of English Course Book class 5 of your English book New Learning to Communicate। स्टूडेंट्स आपने इस स्टोरी को अच्छा से पढ़ा होगा। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। दिस इज़ ए रियली एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड फनी स्टोरी। यू हैव रेड इट ऑलरेडी। आपने जानते होंगे मिसेस स्मिथ एंड मिस्टर जोन्स दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं और हर सैटरडे को मिस्टर जोन्स he was a policeman and he went to his sister's house to have the tea and cakes. Cakes means buns. लेकिन इस बीच में क्या हुआ, एक मिस्टर ब्लैक नाम का आदमी था जो छोटा मोटा चोर था। He was not a dacoit, you can say he was a thief. वो केक चुराता था, रोज केक को चोरी करता था और एक दिन वो पकड़ा गया। ये बहुत ही फनी स्टोरी है, आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा कहानी को पढ़कर। इफ़ द स्टूडेंट्स यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द स्टोरी यू मस्ट सेंड मी द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ़ you have not understood the story, then I will make a new video for you. Okay students, now today's part is about the question answers so that you can prepare yourself for the next examination. Okay students, now let's read and find facts. See that the first question, what did Policeman Jones do every Saturday? Okay, now the answer is there. All of you look at it, the screen of your mobile. Now every Saturday Policeman Jones had tea with her sister Mrs. Smith. Is it clear to you now? Now the next question, what did Mrs. Smith bake for her brother? Why did she do so? Okay, there are two parts of the questions. Now the answer, Mrs. Smith baked buns for her brother. Next part, she did so because her brother very much liked the buns. Okay, now question number 3, where did she put the buns to cool? Why did she go upstairs? Okay, again there are two parts. Now the answer is very small. She put the buns on the windowsill, SILL. Okay, windowsill to cool, ठंडा होने के लिए मिसेस स्मिथ अपना बंस को खिड़की के सामने नीचे जो सिल होता है, मतलब नीचे आप लोग देखे होंगे पिक्चर्स में भी स्टोरी में दिया हुआ है, खिड़की का नीचे का, विंडो का नीचे का जो लकड़ी या तो आयरन स्टैंड होता है, इसे हम लोग सिल कहते हैं, विंडो सिल में वो रखा करते थे ठंडा होने के लिए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर इज दैट then she went upstairs to put on clear dress. क्योंकि बंस बनाते बनाते कपड़ा काफ़ी गंदा हो जाता है और मिसेस स्मिथ went upstairs to put on a clear dress. Is it clear to you? Now question number 4, what did Mrs. Smith put on 6 of her buns? How many did Mr. Black steal? Why could he not put them on a plate?
In question number 4, there are the three parts of the questions. Now students, the answers of question number 4. There are three parts of the questions. You will write after one part of the answer, you will change the paragraph. Means that left side you leave some space. Okay, like that. Now the answer I am telling you, and you can see on the screen. Mrs. Smith put a strong magic glue on 6 of her buns. अब देखो कहानी में भी आप पढ़े हो, वो मिस्टर ब्लैक रोज बंस को चोरी कर लेता था। अब मिसेस स्मिथ ने किया कि उस सभी बंस पर, सभी केक्स पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लू दे दिए, चिपचिपाहट जैसा कुछ गोंद टाइप का कुछ चीज़ ऊपर से दे दिए, ताकि चोरी करने वाला लोग जब भी आएंगे तब उनका हाथ उसमें स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा. ओके, नाउ द स्टोरी यू नो इट वेरी वेल that the answer is like that. Mrs. Smith put a strong magic glue on 6 of her buns. Now the next part of the answer. Mr. Black stole, S-T-O-L-E, that is the past tense. Mr. Black stole 2 buns. Okay, 2 buns चोरी किए थे. Now the third part of the answer. He could not put the buns on a plate because the buns were stuck to his hand firmly. Firmly means strongly, tightly. Okay, मतलब मैंने आपको पहले बताया उस ग्लू का काम यही था. ग्लू जैसे ही कोई उस बंस को छूता, टच करता, ऐसे ही वो बंस उसका हाथ में स्टक हो जाता, चिपक जाता. ओके, नाउ द आंसर इज क्लियर टू यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 you see. Where did Mr. Black decide to go? Why? Next, see the answer. 5. Mr. Black decided to go to his sister for advice. मतलब मिस्टर ब्लैक, आप सोचे, अब जब हाथ में इस तरह का बंस स्टक हो गए, चिपक गए, तब सोचे मैं अपना सिस्टर के वहाँ जाके इसके बारे में कुछ सॉल्यूशन करूँगा. नाउ सी दैट इज़ वेरी इजी आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डिड मिस्टर ब्लैक डू व्हेन ही मेट Policeman Jones? What happened? There are the 2 parts of the answers and very funny answers. You know in the story that. Now 6. Mr. Black held out his hand to Mr. Jones. Mr. Black को पता नहीं था ऐसा हो सकता है, ऐसे होने वाला है, क्या घटना होने वाला है. मिस्टर ब्लैक मिस्टर जोन्स के साथ भेंट होते ही, मुलाकात होते ही अपना हाथ को बढ़ा दिए. ओके, नेक्स्ट आई एम टेलिंग द आंसर. मिस्टर ब्लैक हेल्ड आउट हिज हैंड टू मिस्टर जोन्स. ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर. व्हाट हैपेंड? देन their hands stuck to each other. Okay, their hands stuck to each other. Okay, the answer is clear to now. Now 7. Why was Mrs. Smith surprised? What did she say? Mrs. Smith इस तरह से मिस्टर जोन्स और मिस्टर ब्लैक को एक साथ में हाथ मिलाते हुए देखकर क्या बताई, क्या कहती है? देखो, मिसेस स्मिथ was surprised because Mr. Black and her brother came to her home as friends. दोस्त की तरह दोनों आए, एक दूसरे का दोस्त है,
दोस्त के जैसा एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए आए. Second part of the answer, she said that she had not known that Mr. Black and her brother had been such close friends. अब स्टूडेंट समझ रहे होंगे कहानी कितना फ़नी है. मतलब मिसेस स्मिथ बहुत मजाक से बोले, जो उन्हें तो पता ही नहीं था कि मिस्टर ब्लैक और मिस्टर जोन्स, उसका भाई, इतना क्लोज फ्रेंड्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट आंसर्स. क्वेश्चन, व्हाई डिड द पुलिसमैन टेक मिस्टर ब्लैक टू द पुलिस स्टेशन? नाउ द आंसर. Children, look at the screen now. Now the answer of 8. The policeman took Mr. Black to the police station for punishment. Okay, ये तो आप कहानी में पढ़े हो. अंत में पुलिसमैन मिस्टर ब्लैक को पकड़ के थाना में ले जाते हैं, पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, ताकि उसको ऐसा हल्का फुल्का कुछ पनिशमेंट देने के लिए, ताकि आगे चल के ऐसा काम ना करे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट आंसर लास्ट. हाउ डिड मिस्टर ब्लैक गेट रीड ऑफ द मैजिक ग्लू? इस मैजिक ग्लू से उस ग्लू जो मिसेस स्मिथ ने लगाए थे, उससे कैसे छुटकारा मिला? नाउ द आंसर. मिसेस स्मिथ poured, that is poured, P-O-U-R-E-D, poured some magic water on their hands, and the stickiness was washed away. Is it clear? They are really very small answers, and in the time of the lockdown you can write them very easily, I think so. And I hope that all the students, you got all the answers very well. Okay, goodbye.